जी अस्सलाम वालेकुम. This is Bakar Ahmed and I want to introduce myself because it's my first ever lecture that has been recorded for YouTube purpose. I've been teaching for almost an year and just a couple of days back I just completed a session with those students who were deserving and who couldn't afford fee. So as my training is just round the corner for 50th CTP, I was allocated in PSP. So when it's training, it's been just a couple of weeks. So that's why I've decided to upload a few lectures that might help the aspirants who don't have access to the sources and who can't actually afford the fees of online tutors or academies. So, as per my understanding, I'll be guiding you through my short videos, especially for compulsory papers and more specifically for essay as well as Prezi. So, before I start with the former lecture, I want to introduce myself. My name is Vakar Ahmed and I am from 49 Common OMG and now relocated in 50th CTP and PSP group. So, I've cleared the CSS exam twice and I've just appeared twice in this exam and I got my desired allocation, Alhamdulillah. Also, I've cleared PMSKP in 2018, but I wasn't interested going to provincial services, so I kept intact with the federal services and remained in OMG. And currently, I'm posted as section officer in a ministry. So, if I tell you about my academic qualification, I've done masters in commerce. And across my academic career, I just joined and attended the government institutions like government school, colleges, and university. I have job experience as well, which made a bit difficult for me to manage my CSS studies and the plans I have in my mind. But still, I was lucky enough to qualify this exam twice, and I just want to share with you my experience and journey that I have been through, and I tried the to maintain my motivation and commitment to my goal to clear this exam. So it's not that much tough as perceived in our society. It's exaggeration actually among aspirants that it's quite a tough exam. So in 2021, I was 6, 7, or 8 in written exam in Pakistan and overall 38th position. And inshallah, I'll try to make it a bit simple for you. So, without further ado, I want to start this topic right away. So, as I've introduced myself, as it is the first lecture, so I wanted to, know you and wanted you to know me actually, because a formal introduction is quite helpful to, understand who's talking and who's delivering a lecture. So, I'm really sorry. I my lectures are actually boring, but it will help you, inshallah. Okay, so there are about, as most of you know that there are just 10 topics and you have to opt one and write on it. But actually, I want to give my review of the CSS essay paper of 2023. So it was kind of a test of nerves for the aspirants and candidates. Actually, the normal perception, the regular outlook of this exam and especially this paper was that they'll take almost 5 to 6 topics from problematic issue based essay, like an issue of Pakistan that has to be tackled. So it is quite easy to collect data and remember it, memorize it, and just give some solutions way forward. So, the conventional approach. But very recently, different provincial management services as well as a few exams that currently just being conducted, they favored actually the literary topics, the proverbial essay, the expository, descriptive, argumentative essays. So that's why this paper was kind of
out of the box and was kind of a surprise for the candidates right there in the examination hall. So, most of the topics were literary. By whatever name you want to call it, but still it was literary topics, and it was quite hard to tackle and understand the topics. Some were quite, seemed very easy. It was hard to tackle there. So today our the topic of discussion is Boys Will Be Boys was a very famous and favorite essay of CSS essay paper of 2023, because it was quite, it is a stereotype, a taboo in the society, and we normally talk about it even in general terms with our friends, with our family, that boys will be boys. So actually you have to understand the meaning of it, its inception, and you have to just explain the topic and then go with your regular main argument to justify the statement. And then you can give a counter narrative, and you have to counter the counter narrative, a way forward for this, in a conclusion. So first I want to start with the meaning of the topic. So we have talked about it. Actually, it was taken from an article of, I think, 2019. So we don't have to confine ourselves to that article actually. So I want to start with the literal or dictionary meaning of this statement. So actually this statement, boys will be boys, actually stress upon the fact that people, our society, should not be surprised when boys or men act in a different, rough manner, noisy manner, a careless manner, irresponsible manner, because they actually perceive that men, or we normally call male, inherent, actually inherent, or they have inbuilt this kind of mischievous behavior, mischievous character. So actually it is acceptable in society. Unfortunately, but the fact of the matter is that it is, to very great extent, it is acceptable in society, that it is inbuilt, inherent character of male to be mischievous, aggressive, and it actually gives a good excuse to male that they are, they have some kind of backing justification that it is their character, inbuilt character, inherent character. So it gave them a justification, a reason to do something. So this is actually the literal or dictionary meaning of the statement. And the exception traced back to 15th, 16th century, when it was in Western societies, it was quite normally used for mischievous or naughty kids, boys. So after that, you have to actually introduce, and you will go towards exposition of the statement, like what is its meaning. You will unearth it. Unearthing means that you will explain it. You will give some kind of instances and domains where do you observe it in society, or globally, or in the state. So you will unearth it actually. You will explain it. So actually, this is just the first lecture, but I have a few recorded lectures as well, and I'll be uploading those lectures very shortly, in a few days. So you can follow that for the proper structure of an essay, that how to write an outline, introduction, body paragraph, conclusion, thesis statement, and how to make, different arguments about a topic. I've covered in those lectures actually the problematic issue-based essay as well as literary, expository, descriptive kind of essays. So it will be helpful. Please follow those lectures as well for the, complete understanding how to tackle such topics. So now, if we actually go to the very, outline, the very main points of this topic, that how do you tackle it.
So first you start with the introduction. This is, I mean, a rough outline, but you will be adding some additional points as well, like the fourth point, that how the statement boys will be boys are used to justify male behavior. So here, this is actually the main topic that you will give most of your arguments. The main arguments will be placed in this, under this fourth point. So I want to start from the introduction and the thesis. Okay, just a second, please. Okay, so I have separate lectures on thesis statement, that how do you write it. So we can write the thesis statement in the outline in front of introduction point, the first point, that this is our stance, we agree with the statement or not. And we will have to write it. I mean, it is mandatory to express your thesis, your stance, your position in the introduction paragraph, the first paragraph. So here I'll be just explaining the thesis, that how to write the thesis of this statement. So you can write it as this, that boys will be boys is a statement normally heard is an excuse for male misbehavior. ये नॉर्मली एक एक्सक्यूज के तौर पर बयान किया जाता है या फॉरवर्ड किया जाता है अगर कोई मेल जो है मिसबिहेव करे, लाइक एक लड़का है वो मिसचीवियस एक्ट करे, मिसबिहेव करे किसी के साथ, सो नॉर्मली वी से इन जनरल टर्म्स बॉयज विल बी बॉयज. So what this statement actually implies? It implies that male behavior is inherently mischievous. It is unavoidable. It is unchangeable. And they are actually, I mean, normally inclined towards doing inappropriate things and having inappropriate behaviors towards especially the other genders. So what this statement do? What this statement actually does is it normalizes the male behavior of toxic masculinity. Toxic masculinity is a term normally we quite often hear it in the gender studies. The masculinity that is harmful to other genders. That state of masculinity that is harmful to other genders are toxic masculinity. So actually अगर हम इस notion पर believe करें that it is justified and it is appropriate, so normally this statement actually encourages the toxic masculinity in the society, and this suppresses women. It normalizes the bullying, aggression, and also other sort of violence in the society. It justifies that, and there has to be a way. This notion has to be countered. It has to be done away with in order to promote the gender equality in society. सो थीसिस में आपने जस्ट ये मेंशन करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, द पोजीशन ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड द एक्सेप्टेबिलिटी लेवल इन सोसाइटी, actually this statement justifies the male misbehavior, mischievous act, inappropriate behavior, that it is ingrained in character, and it is actually a part of the male gender that they will have to be, I mean, they will be mischievous and do inappropriate things actually. सो चूंकि ये जस्टिफाई करता है उसको, सो अल्टीमेटली ये क्या करता है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और हरासमेंट और बुलिंग, इस चीज़ को क्या करता है, इनकरेज करता है. एंड एज अ रिजल्ट जेंडर इनइक्वालिटी सफ़र, आई मीन जेंडर इक्वालिटी का जो नोशन है वो इट फेसेस अ सेटबैक, a major obstacle. It proves as a major obstacle to gender equality, and it has to be done away with through some measures. So जब हम ये कहते हैं last sentence पे, it has to be done away, something has to be done, pragmatic measures has to be taken. So normally we refer to the way forward of a problem. This is a problem and we have to give a way forward. So this was about introduction. बाकी introduction के जो structure है वो मैं अलग lecture upload करूँगा, and you'll have to watch it as well for the proper understanding how to write an introduction. This was just
a little discussion on the thesis statement. Okay, so moving on. So now the exposition of the topic, unearthing it. So you'll have to give the meaning of this statement कि इसका मतलब क्या है, where do you see it applies actually in society or different societies. आप वहाँ पर जनरल इस पर डिस्कशन करेंगे, लाइक द व्हाट पार्ट कि व्हाट इज दिस स्टेटमेंट, इसकी रियलिटी क्या है, इसके डोमेन्स, इसके होराइजन्स, वो आप बयान करेंगे कि ये कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स है ऑफ द सोसाइटी वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं. So you will just discuss this topic in expository manner. You will give, you will unearth the topic, the statement. ठीक है, स्टेटमेंट पर आपने डिस्कशन करनी है, जनरल डिस्कशन इन द सेकेंड पैराग्राफ. अच्छा, उसके बाद द प्रिवेलिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी. तो यहाँ पर आप रीजंस और वो इंस्टेंसेस एग्जांपल्स देंगे. लाइक दिस इज आल्सो अ कनेक्टिंग पैरा, दिस इज नॉट द मेन टॉपिक. सो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्तलिफ आई मीन डोमेन्स में के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये जो मुख्तलिफ डोमेन्स है वहाँ पर आप देखेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है या नहीं. सो वहाँ से आप जो है मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स, 2-3 आर्गूमेंट्स बनाएंगे कि सोसाइटी में इस लेवल पर है. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल एस्पेक्ट के इनइक्वालिटी, तो अगर आप देख लें एज अ वोटर, एज कंटेस्टेंट, एज पॉलिटिकल वर्कर, एज रिप्रेजेंटेटिव, एज अ कैंडिडेट, उसके पास क्या रिसोर्सेज है, क्या इनइक्वालिटीज़ कंपेरेटिव टू मेन या मेल, उसको क्या सफ़र करना पड़ रहा है वेमेन को. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. सेकेंड, आप जो है सोशल लेवल पर देखेंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक लेवल पर देखेंगे. सो आपके पास काफ़ी डेटा होगा. सो यहाँ पर 2-3 आर्गूमेंट्स आप बना लें ब्रीफ से. नाउ द मेजर टॉपिक, लाइक मैं जब भी क्लास देता हूँ सो वहाँ पर लाजमी ये डिस्कस करता हूँ, आपका जो बेसिक ऐसे है वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. अगर वहाँ पर आपके आर्गूमेंट्स इनअप्रोप्रिएट है, रिलेवेंट है, या वहाँ पर आपने सफिशेंट आर्गूमेंट्स नहीं दिए, सो इट विल नॉट हेल्प यू देन. क्योंकि आप इस तरह एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना दें, आपने अगर टॉपिक को अंडरस्टैंड सही नहीं किया. अच्छा, जस्ट टू क्लेरिफाई अबाउट दिस टॉपिक, डिफरेंट ट्यूटर्स हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ दिस टॉपिक. इसका मतलब जेंडर इनइक्वालिटी है और इसकी अपनी वो पॉइंट ऑफ व्यू है. आई रिस्पेक्ट दोज बट आई हैव माई पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो द फोर्थ पॉइंट, हाउ द स्टेटमेंट बॉयज विल बी बॉयज आर यूज टू जस्टिफाई मेल बिहेवियर. यहाँ पर मिस बिहेवियर अगर आप लिखें वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा. सो यहाँ पर आपने मुख्तलिफ अपने आर्गूमेंट्स देने हैं और जो कि आपके मेन आर्गूमेंट्स. सो एटलीस्ट मेन आर्गूमेंट शुड बी अप टू 8 to 10 आर्गूमेंट्स. बाकी आप इधर उधर की केस के इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड और अल्टरनेटिव व्यूज़ यानी काउंटर इसका क्या है. बट द मेन जो आपका फोकस होना चाहिए, लाइक मेजर चंक ऑफ योर एसे शुड बी ऑन द फोर्थ पॉइंट कि ये किस तरह जस्टिफाई किया जाता है इन सोसाइटी टू जस्टिफाई द मेल मिस बिहेवियर. सो आपके जो मेन आर्गूमेंट्स होंगे, फर्स्ट आप ये कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट reinforces the stereotype that boys and men are inherently mischievous, wild, uncontrollable. ठीक है, आपने फर्स्ट ये दे दिया यहाँ पर. फर्स्ट जो आपका मेन स्टांस है वही आपने आर्गुमेंट बना लिया कि एक्चुअली ये रीइंफोर्स करता है सोसाइटी में कि ये जो काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप बन गया है, एक्सेप्टेबल नॉर्म बन गया है, जनरल परसेप्शन सोसाइटी की ये होती है कि जो मेन है या बॉयज़ है, सो उनका जो इनअप्रोप्रिएट या एग्रेसिव बिहेवियर है, वाइल्ड, रफ वो बिहेवियर है, सो इट इज़ इनहेरेंट, इनबिल्ट, इनग्रेंड इन देम. दिस इज़ योर फर्स्ट आर्गुमेंट. सेकेंड आर्गुमेंट शुड बी, ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है एज एन एक्सक्यूज टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, क्रिटिसिज्म. इससे बचने के लिए ये यूज़ किया जाता है. एंड एज अ रिजल्ट it actually perpetuates that male misbehavior is acceptable and normal. लेकिन आपने आर्गुमेंट ये दे दिया कि
जस्ट टू अवॉइड और एवेड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, उससे बचने के लिए ये नॉर्मली ये स्टेटमेंट यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल चीज़ सोसाइटी में बन जाती है। इट परपिचुएट्स इन द सोसाइटी एज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, ये आपका सेकेंड आर्गूमेंट आ गया कि आंसरेबिलिटी से बचने के लिए। नाउ व्हाट शुड बी योर थर्ड पॉइंट? अगर आप देख ले, सो अगर ये एक्सेप्टेबल हो तो उससे क्या होगा? इट विल एक्चुअली encourage and promote negative and harmful behavior of a male, as well as it will encourage टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एज वेल। सोसाइटी में अगर ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो तो मज़ीद वो जो नेगेटिव नोशंस है सोसाइटी में वो मज़ीद इनक्रेज होगी, प्रमोट होंगी, अगर इसको एक्सेप्टेबल माना जाए। ठीक है, दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट कि सोसाइटी में जो मिसबिहेवियर है या हार्मफुल नेगेटिव बिहेवियर है एज वेल एज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो मज़ीद प्रमोट या इनक्रेज होगी, अगर ये नोशन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है कि आई मीन हर बंदे को, हर मेल को जस्ट ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए कि ये सब कुछ तो इन ग्रैंड हैंड बॉयज विल बी बॉयज। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट, एक्चुअली क्रिटिक्स क्या कहते हैं इसके, वो इवन वो भी ये चीज़ डिस्कार्ड करते हैं, इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये जो है ये जस्ट गलत नोशन है कि ये इन बिल्ट हैंड ग्रैंड है, एक मेल के कैरेक्टर में नेचुरली मौजूद होता है कि वो एग्रेसिव और मिसीवियस होगा, उससे गलतियाँ होंगी, वो रेश होगा, वो आई मीन केयरलेस होगा। सो इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो बिहेवियर, इवन अगर किसी ने जेंडर स्टडीज़ पढ़ी है, सो उसमें एक होता है सेक्स और एक जेंडर होता है। सो जो जेंडर होता है लाइक मेल एंड फीमेल, सो वो सोसाइटी जो है उसको मोल्ड और नॉरिश करती है। जिस तरह की सोसाइटी आपको सोसाइटल मीन आउटलुक मिल जाए, आपकी जिस तरह नर्सरिंग हो आप उस तरह बन जाते हैं। सो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये गलत नोशन है कि ये दिस इज इनग्रेंट समथिंग इनबिल्ट इन अ मेल। सो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। योर फिफ्थ पॉइंट, इट सर्व्स इज द बेस्ट एक्सक्यूज फॉर मेंटेनिंग जेंडर इनइक्वालिटी। अगर आप इसी चीज़ को ही मान लें कि ये तो बस एक नॉर्मल चीज़ है, ये जो बॉयज़ विल बी बॉयज़ और इनमें ये सब कुछ इनग्रेंड है, इनबिल्ट है, तो ये तो आई मीन आपकी जो जेंडर इक्वलिटी की वो मूवमेंट है, जो फेमिनिस्ट जो है इतनी जेंडर इक्वलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन विमेन जो है, सो वो तो इसके बिल्कुल आई मीन एंटीथीसिस कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर आप ये मान ले कि मेन का जो बिहेवियर है मेल का, इट इज़ एक्सेप्टेबल एंड इट इज़ नेचुरल, सो आई मीन इट इज़ क्वाइट एन एंटीथीसिस to the very notion of gender equality। और अल्टीमेटली क्या होगा दैट अ वुमेन लाइक लेट्स से ए वुमेन जो है वो हरास हो गई, एक औरत पर आई मीन उसकी हरासमेंट हो गई, तो अगर आप इसी को जवाब बना ले दैट बॉयज विल बी बॉयज और ये एक्सेप्टेबल है, सो आई मीन शी विल फील लाइक शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अगर आप इसी चीज़ को मान ले, सो लेट्स से एक औरत पर वो लेट्स से जेंडर जेंडर बेस्ड वायलेंस का वाकया है, लाइक नूर मुकद्दम का जो केस है, सो अगर इसी को जस्टिफिकेशन माना जाए, तो फिर तो जस्टिफाइड है वो जो कल्प्रेट है, और विक्टिम जो है उसके लिए फिर ये होगा कि उसको कोई हक नहीं सिक्योरिटी की और प्रोटेक्शन की। आई मीन शी हैज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर जस्टिस देन। सो ये भी आप कोट कर सकते हैं। एक तो जेंडर इक्वालिटी की नोशन के खिलाफ है, और women ये फील करेगी that they are not entitled to protection because the male has a justification for every wrongdoing they have done। ठीक है, these are some points and I'll be adding a couple of more। now अगर हम देख ले ऑन सोशल मीडिया, इसमें मुख्तलिफ डोमेन से आप जो है पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर मेन आर्गूमेंट्स। सो इसका तरीका मैंने अपने लेक्चर्स में सिखाया है, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, यू इट विल हेल्प यू लॉट। सो करंटली
नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह हर चीज़ की एक अनकॉन्शियस बेसिस पे इंसान के अंदर वो एक परसेप्शन बन जाती है। सो अगर हम मीडिया पर देख ले जिस तरह सार्केज्म और ये मीम शेयर हो रहे हैं दैट बॉयज विल बी बॉयज, और हम लाइटर मूड में जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट वो हम शेयर करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ जस्ट परपिचुएटिंग इन आवर सोसाइटी द वेरी नोशन कि बॉयज विल बी बॉयज और वो जो भी कर रहे हैं इट इज़ देयर नेचर। सो सोशल मीडिया भी इसमें एक पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है। ठीक है, इससे एक पॉइंट आप बना सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स एक फैमिली सेटअप है या इवन इन सोसाइटी। अगर आप यही नोशन इसको एक्सेप्टेबल बनाए, सो व्हाट अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस? हाउ विल द अपकमिंग जनरेशन रिस्पॉन्ड टू दिस? अगर ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, अगर एक फैमिली सेटअप में इफ इट इज़ एक्सेप्टेबल, so what will the a little boy when he feels and observe and learn these things, how will he react at his younger age, at his later stage? आपने तो उसका वो माइंड बना लिया जिस तरह वो फर्स्ट ऐसे आया था कि इंस्ट्रक्शन अर्ली एज अर्ली यूथ क्या होता है, इट इज इंग्रेविंग ऑन ए स्टोन। वो पक्की बात बन जाती है, वो नक्श हो जाता है उसके जहन पर। सो अगर यही जो परसेप्शन है इसको एक्सेप्टेबल बनाया जाए एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ग्रेटर एक्सटेंट इन सोसाइटी, so the coming generation they will learn the same thing and they'll repeat the same blunders and they will feel like they have this inherent limitation or a kind of legacy with them कि इनके पास एक justification मौजूद है। so this is another problem for the upcoming generations अगर हम इसको मान लें। और इसमें मज़ीद आप ये कह सकते हैं कि इवन कुछ ऐसे तबकात हैं जो कि रिलीजन की मिस इंटरप्रटेशन करते हैं और वो जस्टिफाई करते हैं कि मेन जो है वो नेचुरली एग्रेसिव है, दे आर द एजेंट, दे आर सुपीरियर टू वेमेन। आई मीन I'm not talking about a particular religion, but right now I'm talking about the misinterpretation of religious injunctions. वो इवन जस्टिफाई करते हैं हरासमेंट को या वायलेंस अगेंस्ट वेमेन को। ठीक है, सो ड्यू टू द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस इंजंक्शन। सो ये आप इस तरह कुछ आर्गूमेंट्स, ये आपके मेन आर्गूमेंट्स बन गए जिस जिस पर आपकी जो थीसिस है वो कड़ी होती है। एक्चुअली आपने जो थीसिस दिया था ना कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, ये जेंडर इनइक्वालिटी को मजीद प्रमोट करती है एंड समथिंग हैज़ टू बी डन। सो आपने ये कुछ आर्गूमेंट्स दिए जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किए, बट आफ्टर द फोर्थ पॉइंट जिसमें आपके ये मेन आर्गूमेंट्स आ जाएंगे, इसके आप इम्पैक्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रिवेलिंग वायलेंस है इन द सोसाइटी, इट इज़ ड्यू टू दिस। ये एक मेजर रीज़न है उसमें, कि जो प्रिवेलिंग वायलेंस है ये इसी की वजह से कि सोसाइटी में अगर ये परसेप्शन हो, वायलेंस तो लाजमी होगी, बिकॉज द मेन जो है ये या मेल जो है मेल जेंडर, they consider themselves entitled to inflict upon women violence and harassment and aggression, everything. So first इसका impact वायलेंस होगा, जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि आजकल जो फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म की मूवमेंट, द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, इट्स ऑन द पीक, और एक्चुअली इट हैज़ पेनिट्रेटेड इनफिल्ट्रेटेड इनटू डेवलपिंग एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। यहाँ पर भी वी कैन ऑब्जर्व सिंस 2017 औरत मार्च हर साल होती है, एंड दे आर आई मीन दे आर एडवोकेटिंग ड्यू राइट्स फॉर वीमेन एंड जेंडर इक्वालिटी। सो आप देख सकते हैं, सो अगर ये नोशन सोसाइटी में हो, ये तो इट सेल्फ जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज्म मूवमेंट के लिए एक बड़ी ऑब्स्टिकल है, एक रुकावट है। और इस तरह सप्रेशन ऑफ वेमेन वो कंटिन्यू होगी, दियर मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम, दियर सप्रेशन, दियर एक्सक्लूजन फ्रॉम नेशनल लाइफ एंड डिफरेंट स्फेयर। जिस तरह मैंने बताया कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्फेयर्स में आप देख लें कि उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सो ये आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट इस पर ज़्यादा आप फोकस नहीं करेंगे, 3-4 आर्गूमेंट्स काफ़ी है, एंड आपके पास होंगे ये आर्गूमेंट्स।
इसके बाद आपने अल्टरनेटिव व्यूज देनी है कि कुछ लोग तो बिल्कुल ये समझते हैं, लाइक वो तो इस बिलीफ को समझते ही नहीं। वो तो ये समझते हैं कि मेल जो है उसके पास एजेंसी होनी चाहिए, बिकॉज सोसाइटी में एक एजेंट होना चाहिए एंड एक फॉलोअर, ओबीडियंट फॉलोअर होना चाहिए। सो मेन जो है, मेल जो है, मेल जेंडर, इट हैज़ द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू लीड द सोसाइटी। सो एक अल्टरनेटिव आर्गुमेंट जो इसी को सपोर्ट करता है, अभी जो अभी तक जो आर्गुमेंट्स हैं हमने दिए वो इसके अगेंस्ट है कि ये जो परसेप्शन है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये गलत है और इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। सो अल्टरनेटिव इसका क्या होगा, लाइक द काउंटर वन, वो आप इसके अगेंस्ट देंगे कि ये एक जस्टिफाइड चीज़ है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये बिल्कुल ट्रुथ है एंड इट इज़ आई मीन प्रूवन साइंटिफिकली, या जो भी आप बता दें। सो यहाँ पर आप एक अल्टरनेटिव व्यू लाजमी देंगे कि जो मेल बिहेवियर है इट एक्चुअली ये प्रमोट करता है कि सोसाइटी में एक जो मेल जेंडर है वो एक एजेंट होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए। सो आपने इसको काउंटर करना है विद इन द सेम पैराग्राफ। ओके, एंड उसके बाद जो है आपने लाजमी वे फॉरवर्ड भी देनी है, जिस तरह थीसिस में आपने कहा था कि समथिंग हैज़ टू बी डन, प्रैग्मेटिक मेजर्स शुड बी टेकन। सो आपने लाजमी उसको उसको कवर करने के लिए एक वे फॉरवर्ड देना है कि क्या क्या करनी चाहिए। लाइक आपने इक्वल पेरेंटिंग के बारे में बात करनी है, इवन उस पर ऐसे भी आया था 2023 में। आपने बात करनी है ऑन promoting equality and society through pro-women legislation and its implementation। ठीक है, वो करनी चाहिए। आपने ये नहीं कहना कि जेंडर न्यूट्रल जो है वो कोटाज या लेजिस्लेशन या पॉलिसीज बनानी चाहिए, बिकॉज वेमेन की विजिबिलिटी जो है, मेन स्ट्रीमिंग जो है, वो पार्टिसिपेशन वो ऑलरेडी कम है। सो उसको ऊपर लाने के लिए यू हैव टू मेक एंड enact प्रो वेमेन लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके अलावा आपने अवेयरनेस, जिस तरह करिकुलम में या स्कूल कॉलेजेस लेवल पर हमने ऐसे करिकुलम में ये चीज़ डालनी है, शामिल करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है। एज वेल एज अवेयरनेस कैंपेन्स, मीडिया यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया, ताकि आई मीन एक जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी हो जो कि बिलीव रखती हो इक्वलिटी ऑफ जेंडर पे, एंड जो इसको लाइक रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन है उसको कर्टेल करना, कि उसको कर्टेल किया जाए जितने भी लेवल पर हो, क्योंकि दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेस। एंड देन यू विल कंक्लूड योर टॉपिक। सो दिस इज द आउटलाइन, द होल स्ट्रक्चर ऑफ दिस, से जिसमें आप इस तरह आप इसको टैकल कर सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। सॉरी अगर आई मीन मैंने कुछ मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो, बट आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पॉइंट्स एंड द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एन essay, it how to tackle a topic, how to build arguments, introduction किस तरह लिखना है, conclusion outline किस तरह बनानी है, body paragraph इसमें coherence बनाना। सो वो इंशाल्लाह आई अपलोड द लेक्चर्स जो मैंने प्रीवियस बैच में दिए थे, वो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। एंड जस्ट लास्ट थिंग कि this is my WhatsApp, so you can, if you have queries, questions, you can ask me on this number. This is for students actually, I address their queries। एंड अगर ये फाइल आपको चाहिए, द कंप्लीट आउटलाइन, आई हैव दिस फाइल। इट wasn't possible for me to I mean put it in these slides, but if you need the file, shall I provide it through WhatsApp। मैं ग्रुप बना लूँगा, वहाँ पर मैं अपने फाइल्स वगैरह शेयर करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई होप इट वाज हेल्पफुल एंड you have any queries you can reach me। So stay blessed। Allah Hafiz।